Hi, this is Utkarsh Bhargav and welcome to another amazing episode of Daily Market Analysis. And today, if you will see, आज काफी interesting day था. Nifty suddenly took a U-turn after first 20-30 minutes और उसके बाद Nifty धीमे धीमे पावर के साथ ऊपर की तरफ जाने लगा. अगर आप आज की डेट में देखेंगे, the center of attraction was definitely the Adani Group. The Adani Group stocks were definitely the center of attraction, hitting the lower circuit and then coming back from there. So Nifty crashed within the first 20 minutes. But after that there was a complete surprise given to the sellers from that point onwards. बैंक निफ्टी भी निफ्टी के साथ रिवर्स किया, बट निफ्टी जितनी बुलिशनेस के साथ रिवर्स किया था उतनी बुलिशनेस के साथ बैंक निफ्टी ने रिवर्सल नहीं लिया. इनफैक्ट 35,000 इज स्टिल देयर एज अ गुड रेजिस्टेंस इन बैंक निफ्टी. बट ऐसा हो सकता है कि कल आपको निफ्टी एक फ्रेश गैप अप ऑल टाइम हाई के साथ दिख जाए. एंड हियर एंड देयर अ फ्यू प्रॉफिट बुकिंग सेशंस कैन कीप कमिंग बिकॉज अगेन द मार्केट इज टचिंग ऑल टाइम हाई. सो you should expect that profit booking to come again and again. But in general the market still remains bullish. हम पिछले कुछ दिनों से ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि 16,200 पे कॉल ऑप्शंस बहुत हेवीली राइट हुए हैं. दैट मींस दैट मार्केट कैन मूव एंड शो इट्स मूव टिल 16,000 एटलीस्ट. दैट इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन नॉट इग्नोर. एंड आज की डेट में अगर हम देखें तो ऐसी रिपोर्ट्स थी, ऐसे रूमर्स थे. रूमर्स में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बाद में 3 बजे के आसपास अदानी ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं. तो रिपोर्ट्स क्या थी? रिपोर्ट्स ये थी कि NSDL ने 3 ऑफशोर अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं. दोज वर द मेजर FPIs who were pumping money into the Adani stocks. Then that news definitely did hit hard on the Adani stock and the complete Adani sector. So that was something that was in highlight today. उसके अलावा अगर आप देखेंगे, टाटा मोटर्स was again one of the top gainers for Nifty 50 index. I think it did hit fresh all-time high today. So that was one thing to see. Again, India's wholesale price inflation data came out today, and the WPI data actually stands at 12.94%, I believe. Yes, and but still the market took this as a positive sign. Why? Because the market expectations for the WPI data was I think close to 13.40%. So 13.40% की expectation थी inflation data की, और वो आया है 12.94%. So that is actually less than the expectations. So that is a good sign, because it's if the inflation data would have been even more, that is not a good sign for economic recovery. So other than that, if you will see, बैंक निफ्टी अगर डिसाइड करता है मूव करने का, बैंक निफ्टी हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. दैट इज मेनली powered by HDFC Bank. So if Bank Nifty decides to actually move back up slowly, we might see some good move in Bank Nifty, and this move will be incorporated directly into the Nifty 50 index. अभी Nifty के अंदर क्या है कि Nifty IT और Nifty Metal might take a pause and breathe for a while, because they have been performing really well from past few trading sessions, but Bank Nifty has not been performing, and it's high time that Bank Nifty, if performs, Nifty is definitely going to test 16,000. So that is one possibility. And in today's terms, 6 stocks did came into our custom scanner at the Millionaire Trader Club. I'll just show you all the 6 stocks. Out of those 6 stocks, 2 of the stocks hit our target. 2 of the stocks did not trigger our entry, and 2 other stocks we exited manually with small profits because there was sideways momentum in those stocks. So अभी हम उन सभी 6 stocks के बारे में डिस्कस भी करेंगे, और इस पूरे वीडियो में हम डीपली समझेंगे कि आज जो मार्केट में हुआ वो क्या हुआ, हमने निफ्टी के अंदर जो ट्रेड लिया वो कैसे लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, और साथ में कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स होने चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. उन लेवल्स को आपको कल फॉलो करने से फायदा हो सकता है. सो stay tuned till the very end of the video, because you are going to learn a lot today, even in today's analysis video. Every single day we bring you such amazing analysis videos so that you can learn how the markets behave, so that you can stay updated from the important news from the markets, and so that you can actually know the important levels to trade in the next trading session. So if this all makes sense to you, if this all is important to you, it's very simple. Just hit the subscribe button and the bell notification icon, because I don't want you to miss any single video that comes out from the Roaring Bulls channel, because these videos are actually going to create a lot of difference into your trading style and into your trading journey in long term. देखिए, if अगर आप सीखने में विश्वास रखेंगे तो आपके लिए जीतना comparatively आसान हो जाएगा. I already keep saying that option buying or in general stock market is a place where 95% of the
people lose their money, and that's a cold, harsh truth. Now, the reason that 95% of the people lose their money is that they don't believe in the learning process. They don't believe that they actually believe that trading is gambling, and they try to follow the telegram tips that are given to them. So these things actually don't work. Let me tell you very clearly. In fact, आपको बहुत से लोग YouTube पे मिल जाएंगे ये प्रॉमिस करते हुए कि आप 50,000 का कैपिटल लेके आइए, 1 लाख रुपए बन जाएंगे, 1 लाख का लेके आइए, 1.5 लाख बन जाएंगे, 1.5 लाख का लेके आइए, 10 लाख बन जाएंगे। नहीं बनने वाले। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ऐसा नहीं होने वाला। ट्रेडिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड वेरी टीडियस प्रोसेस and maybe a very stressful process as well. But none of the business or none of the good things in this world have come easy to anyone. So अगर आप सीखने तैयार हैं, अगर आप स्लोली उस प्रोसेस पे आगे बढ़ने तैयार हैं, अगर आप रियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने तैयार हैं, तो आप मार्केट में जीत सकते हैं. इफ यू कम इनटू द मार्केट विद 10,000 worth of capital and expect it to double on the same day, please don't follow this channel. This is not a channel. यहाँ पे मैं आपकी इस तरीके से मदद नहीं कर पाऊंगा. What I can do is I can help you to actually realize that if you want realistic returns from the market, then the realistic returns are actually less than 3, 4, 5%. That is the realistic return on your investment. So that is a realistic return on your investment. 3, 4, 5% is a good return. But अगर आप इससे ज़्यादा expect कर रहे हैं, then you are expecting something wrong out of the market. So first of all, set your expectations right, and after that, dive into the learning journey. Slowly keep learning, and most important is that keep working on your psychology. Psychology is the most important aspect of trading. And एक important बात और ये है कि देखिए, ट्रेडिंग में आप अच्छे तभी हो सकते हैं जब आप कर के उसको ट्राई करेंगे. एक्सपीरियंस इज द की टू सक्सेस, नॉट जस्ट इन ट्रेडिंग, इन फैक्ट इन एवरी सिंगल डोमेन ऑफ our life or in business or in any place. Experience is the key to success along with the journey of learning. So for your learning part, we are always there for you, and for your experience part, you have to keep trading slowly, keep experimenting with your capital, manage your position size, and slowly you will start to see good returns from your market. Don't expect returns from day one. Expect them on a later stage of a trading journey, because they will come if you stay dedicated to your learning part and your discipline part and psychology part. So stay tuned till the end of the video. We are going to discuss and analyze everything that happened into the markets today and what is the expectation for tomorrow's trading session. So this is Krish Bhargav. You're watching Roaring Bulls, the stock market show. Okay, so let's see what happened at the Millionaire Trader Club and what happened in our custom scanner. So these 6 stocks came into our custom scanner today. Out of these 6 stocks, Tata Steel definitely did hit our target. ONGC was also very good. ONGC came at a support of 50 moving average. Let me show you how ONGC was and where did we take the trade in ONGC. Let me actually show you. So let me just apply one simple thing. Let me apply my 50 EMA. So basically the point where we took the trade was this particular point. Let me show you this particular point where it took support from the 50 moving average as well as from 124, and we just captured a small move up till 125.5, not beyond that. So we captured this small move into ONGC, and after that, if you will see, let's see which were the stocks that actually gave us good returns for the day. So Power Grid was there. We did make an entry, but we had to exit manually by taking small profits for the day. And after that, Laurus Lab was there. Laurus Lab actually kept moving near to our it kept moving near to our entry point, so we did book small profits at that in that particular stock. And after that, Biocon was there, that did not had our entry trigger. Okay, so now let's do one thing. Let's go back to our important discussion, and that is about Nifty and Bank Nifty for the day. So if you will see, India VIX is still below 15. Can you see that? India VIX is still below 15. That is amazing to see. So the volatility is actually pretty less into the markets, and the markets are moving with a little bit of stability, you can say. There's the fear in the markets is still pretty less. India VIX actually fear का index है. आप
इंडिया विक्स को ये ना समझे कि इंडिया विक्स लो है तो मार्केट बहुत बुलिश होगा। इंडिया विक्स बेसिकली मार्केट के अंदर फेयर को बता रहा है, इस समय फेयर कम है, दैट मीन्स द मार्केट्स आर प्रिटी मच स्टेबल इन वट एवर डायरेक्शन द मार्केट्स आर ट्रैवलिंग। ओके, सो दैट इज वन थिंग टू सी। यूएस मार्केट्स भी ओपन हो चुके हैं एट द टाइम वी आर मेकिंग दिस वीडियो। सो इफ यू कैन सी Dow Jones have Dow Jones have actually opened on a very negative note. As of now we can see that Dow Jones is negative and Nasdaq is actually slightly positive. So we have to see actually कि global markets का सिनेरियो कैसा एंड होता है और सुबह इंडिया SGX निफ्टी क्या बोल रहा था उसके बेस पे हम अपना ट्रेड कल सुबह प्लान करेंगे। यूरोपियन मार्केट्स आर डेफिनेटली ट्रेडिंग लिटिल बिट इन ग्रीन, नॉट वेरी हेवीली इन ग्रीन। ओके, सो लेट्स गो बैक टू निफ्टी फॉर नाउ and we'll discuss what happened in Nifty actually. Can you see a very clear thing? देखिए लेवल्स हम रोज डिस्कस करते हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं ये लेवल्स, अभी आपको बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रहा होगा। जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल, इनफैक्ट लेट मी रिमूव द 50 EMA एज वेल। जस्ट लुक एट द लेवल्स। अभी कितने दिन से मैं आपको एक सिंपल लेवल के बारे में बता रहा हूं कि 15640, 15607 is actually an institutional support zone. A lot of heavy hands have built their position in this particular zone. Can you see that? So what happened today? आज भी क्या हुआ, मार्केट गिरा तो सही पर एग्जैक्टली इस जोन से सपोर्ट लेकर इट फ्लू बैक अप एंड इनफैक्ट ब्रोक द डेज हाई इफेक्टिवली। ठीक है, तो अगर आपको इन जोन्स की इंपॉर्टेंस पता है जो हम रोज डिस्कस करते हैं तो आप कितना इजीली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। हमने अपनी पोजीशन कब बनाई इस चीज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। वी एक्चुअली ट्रेडेड इनटू निफ्टी व्हेन निफ्टी ब्रोक दिस रेजिस्टेंस। लेट मी शो यू। वी एक्चुअली ट्रेड इनटू निफ्टी व्हेन निफ्टी ब्रोक दिस रेजिस्टेंस 15734। क्यों किया ट्रेड, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अभी हम आज के डे के अंदर आ गए हैं, पूरी तरह आज का दिन दिख रहा है। Okay, one thing was very clear that Nifty took strong support from our institutional support level. That was very clear. Point number one. Point number two is that this was a important resistance. 15,734 was an important resistance. What happened? 15,734 यहां पे टेस्ट हो चुका था एक बार। ओके, उसके बाद अगर आप यहां पे देखेंगे तो एक थोड़ा सा आपको फ्लैग पैटर्न टाइप का यहां पे दिख जाएगा। ओके, सो द मार्केट्स वाज टेस्टिंग दिस लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, और यहां पे एक बेरिशनेस आई बट इंस्टेंटली यहां पे रिवर्सल आ गया फ्रॉम दिस सपोर्ट। ठीक है, इंस्टेंटली द नेक्स्ट कैंडल was kind of an engulfing candle if you can see here. So instant reversal actually showed that yes, that there's some strength in the buyers at this point. यहां पे strength available है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वी डिसाइडेड दैट अगर ये लेवल दोबारा रीटेस्ट होता है तो हम यहां पे एंट्री अपनी बनाएंगे। वी डिसाइडेड दैट। सो अगर आप यहां पे देखेंगे तो जब ये लेवल पहली बार रीटेस्ट हुआ था उस रीटेस्ट के बाद एक काफी बेरिश कैंडल आपको यहां दिख रही है आई थी, बट नेक्स्ट टाइम जब ये लेवल रीटेस्ट हुआ तो यहां पे कोई बेरिश कैंडल नहीं आई। द लेवल वाज सक्सेसफुली ब्रोकन आउट, ऑल्दो the bullish power was actually it actually became weak. Can you see that the bullish candles actually started to go small जैसे ये level breakout हुआ, but again the candles were still bullish. Now we took our entry at this level. ठीक है, we took our entry at this level and keeping our stop loss just below our previous low. The previous low was below the previous support basically. So this was our SL. Okay, this was our SL. So we kept a pretty good SL. Sorry, not this was our SL. This was our SL. The previous low was, this was our SL. So we kept a pretty okayish SL, and after that we waited for the index to act, either move up and give us our targets and or hit our SL. So क्या हुआ उसके बाद, इट एक्चुअली केम डाउन बट इंस्टेंटली इट वाज अगेन bought back in and we had a great move on the upside and we definitely booked our profits right at this place when there was reversal. In fact, I think at this place we booked our profits. So it was a good day in Nifty 50 index with the Millionaire Trader Club members and I believe all the members must be happy with this. कल के लिए क्या लेवल्स होंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज कल एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि गैप अप मिले। अगर कल गैप अप मिलता है, ओके, let's assume that we get a gap up tomorrow, then there is a possibility that this zone, that is the institutional resistance zone, जो कि multiple times टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे multiple times टेस्ट हो चुका है, then there is slight possibility कि ये zone resistance की जगह अब support बन जाएगा. So 15,774 and 15,800 zone can actually turn into a
सपोर्ट रेदर देन अ रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे कल एक गैप अप मिलता है, इंडेक्स आके इस लेवल को रीटेस्ट करके वापस ऊपर की ओर जा सकता है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। तो आप उसके लिए तैयार रहिए। अगर गैप डाउन मिलता है तो अगेन इंडेक्स इस लेवल पे आके टेस्ट करके 15734 को टेस्ट कर सकता है, और नीचे आया तो 15689 को टेस्ट कर सकता है, और फिर ऊपर जा सकता है या फिर कंसोलिडेट हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी आपके लिए। जो कल के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2 इज ओपन बिकॉज द इंडेक्स विल देन गिव अस अ फ्रेश ऑल टाइम हाई। तो हम इंट्राडे लेवल में जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। सपोर्ट की अगर हम बात कर लें, सो 15734 इज गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट फॉर टुमारो। 15800 ब्रेक हो चुका है, सो 15734 इज गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट। एंड अदर मेजर सपोर्ट इज अगेन दिस इंस्टीट्यूशनल जोन, सो मार्क दीज लेवल्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स फॉर टुमारो। एक बार ऑप्शन चेन को भी जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग दिखेगा। ऑप्शन चेन पे जब हम जाके देख रहे हैं तो हमको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है 15,700 की, यहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग आज हुई है। दैट मींस दैट स्ट्राइक दिस 15,700 स्ट्राइक प्राइस हैज एक्चुअली बिकम अ गुड सपोर्ट एटलीस्ट फॉर टुडे, एटलीस्ट फॉर दिस एक्सपायरी। ओके, एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 15,900 इज राइट नाउ अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। सो व्हाट आई कैन फील इज फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन द ट्रेडिंग रेंज कैन बी एनीवेयर बिटवीन 15,680 to 15,840. This can be a trading range for tomorrow's trading session in निफ्टी 50 इंडेक्स। अभी बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को हम पहले देख लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि 34,500 जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब। ओके, दिस इज वेरी मच एविडेंट एंड वन थिंग इज ऑल्सो एविडेंट दैट 35,000 कैन बी टेकन आउट टुमारो। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल बी, but there is a slight possibility. Bank Nifty is closed with power at 34,950. 35,000 अभी ब्रेक हुआ नहीं है, but a small gap up can actually break this level, and this level might actually become a fresh support. 35,500 is going to be a good resistance. Okay, तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पे और बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में आज का मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ निफ्टी की तरह ही था, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये नीचे आपको ये लेवल दिख रहा है, ये नीचे का लेवल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये लेवल आपको दिख रहा है, फिर कलर चेंज कर लेता हूं इसका। ये लेवल जो आपको दिख रहा है, दिस लेवल इज सो इंपॉर्टेंट। वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट दिस लेवल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ। लेट्स जस्ट गो बैक एंड सी कितनी बार हम इस लेवल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कैन यू सी दैट देयर वाज हेवी बाइंग फ्रॉम दिस लेवल, हेवी बाइंग अगेन, हेवी बाइंग टुडे इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एंड obviously this is here a important resistance zone. So बैंक निफ्टी को अगर आप इन जनरल देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेके बैठा है बैंक निफ्टी। लेट मी zoom it up a bit. Okay, let me zoom it here. Okay, yeah, फाइन। सो यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 34,411 पे। ओके, और आज के इस मूवमेंट को देखते हुए ये क्लियर हो रहा है कि 34,649 पे भी एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। सो कंसीडर दिस एज अ गुड सपोर्ट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। ओके, अगर नीचे आता है इंडेक्स तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। ओके, सो सपोर्ट 1 इज राइट हेयर। रेजिस्टेंस की अगर बात करें 35,098 इज स्टिल अ गुड रेजिस्टेंस। इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है, तभी इंडेक्स को आप बुलिश कहेंगे, और इंडेक्स पे बुलिश होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट जो लेवल आएगा रेजिस्टेंस का वो तकरीबन 35,445 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस 1, दिस इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट 2। ये हो गई बैंक निफ्टी इंडेक्स की पूरी बात। आपको इन लेवल्स को पूरी तरह फॉलो करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इन लेवल्स का। देखिए, ये सभी लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है आपको ये समझ में आना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को लगता है सर इतनी सारी लाइंस आपने ड्रॉ कर रखी है, ये लाइंस काम की हैं इसीलिए यहां पे ड्रॉ कर रखी हैं। मैं तो इन्हीं लाइंस के बेस पे ट्रेड लेता हूं। ये सारे लेवल्स हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस, हिस्टोरिकल सपोर्ट्स हैं। अगर आप किसी भी दिन में जाके देखेंगे, सो एवरी टाइम एवरी लेवल इज रिस्पेक्टेड। कैन यू सी दैट? Can you see that strong consolidation between levels, then a breakout, and then again between the levels, then a breakout? Can you see that? Why are levels so important? Consolidation and a breakout. तो यहाँ पे इनफैक्ट आज के दिन पे अगर बात करेंगे अपन तो कंसोलिडेशन एंड देन अ ब्रेकआउट। ये कैसे ब्रेकआउट मैं फाइंड करूंगा अगर मेरे पास हिस्टोरिकल लेवल्स मार्क नहीं होंगे? सो that is a very important thing. Marking all the historical levels of support and resistance in your charts is of utmost importance. So make sure you do that pretty well. That's why we bring you analysis videos every single day so that you can mark these levels. Okay, so I hope you enjoyed today's analysis video. I know it is a bit late to post the analysis video today.
for some personal reasons, but again, we'll make sure that we post the video by 6:30 p.m. Every single day for you. So I hope you enjoyed the video. Just in case if you want to become a part of the Millionaire Trader Club and start your journey as an empowered trader, as a trader who believes in learning and believes in slowly reaching their goals instead of becoming a millionaire overnight, so you can then become a part of the Millionaire Trader Club. You love the experience over there. बाकी सभी members के साथ ट्रेड करने का एक अपना एक्सपीरियंस होता है जिसको आप बहुत पसंद करेंगे, और साथ में मेरे साथ और बाकी रोलिंग बुल्स के मेंटर्स के साथ आप लाइव मार्केट में अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं और ट्रेडिंग लेवल्स पे डिस्कस कर सकते हैं. यू आर गोइंग टू लव द होल एक्सपीरियंस एट द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब. दैट फॉर दैट आई एम श्योर. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, द लिंक टू द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब is in the description below. Hit the join button in the description and you are going to fall in love with the community. I know that for sure. So I hope you all are doing good. I hope you have got yourself vaccinated and wearing your mask as well. Take care of your family. Have a great night ahead. See you tomorrow. This is from Utkarsh Bhargav. You are watching Rolling Bulls, the stock market show.